we start the session, I would request everyone to put off their mics and cameras. And if you have any question or any query, you may write in the chat boxes of any with the language that you are comfortable with. So, handing over to Manisha now. Thank you, Deepika, for inviting me. Just, we are presenting. Deepika, can you present presentation? Because I connected from mobile, so I think there may be a problem. Okay, so Manisha, what you can do is you can start with the content as we go along. I'll present it the presentation in this webinar series, right? Okay, Yeah, fine, yeah. fine, fine. So today we are here to talk about creating roadmap for a successful career. Creating a roadmap for a successful career. So बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपसे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्सेज जानना चाहूंगी कि आप हम एक छोटी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप अपने रिस्पॉन्सेज चैट बॉक्स में दे सकते हैं, राइट? सो आर यू क्लियर? You speak in Tamil? Tamil பேசுங்க மிஸ். கரெக்ட்டா பண்ணுங்க. Manisha, you can go ahead with the activity. Manisha, your mic is on mute. Can you please unmute it? Yes. Yes. Yeah. Yes. So here we will do a small activity. Few questions are here. Like first question is, are you clear about your career goal? தமிழ்ல பேசு. Are you clear about your career goal? क्या आपको पता है आपको किस करियर में जाना है? Yes, very good. रणवीर, प्रीति, DK, Hem Singh, yes. Arul, very good. You are clear about your career goal, right? Very good. Yes, Rahul says not clearly. Yes, Asif says yes. Okay. So now the second question is, what steps have to take towards your career? What steps have to take towards your career? Students, you can reply with a yes or a no. Preparation. Yes, Atul says preparation. Yes. कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए अपने करियर में आगे जाने के लिए? Yes. Some of you says yes. Okay. Now the third question is, are you confident or confused? Hard work. Okay, Rajay, hard work. Confused. Yes, somebody says confused. Okay, confused. Okay, hard work. Yes. Confident. Yes, Asif says confident. Very good. Okay, thank you children for your responses. Now we will move ahead. Career guidance and counseling is important for the right educational and career choices to bring out the best in you. So why career guidance is important? Because we want best potential ability in you, right? आप में जो भी पोटेंशियल है, जो भी एबिलिटीज है, जो भी स्ट्रेंथ है, उसमें से किस तरह से हम आपके जो पोटेंशियल है, एबिलिटीज है, उसका बेस्ट से बेस्ट करियर आपको दे सके. हमें समझना होगा कि किसी भी करियर में जाने के लिए हमें सही गाइडेंस यदि सही समय पर मिल जाता है तो हम अच्छी तरह से किसी करियर में आगे बढ़ सकते हैं. Now, as I spoke about today's topic, career road mapping. So first we will understand what is roadmap. For example, if you want to go your school from your home, so your school is a
destination, right? Your school is a destination, and the path you follow to go your school, that maybe you go school by a walk, by a any vehicle, rickshaw, cycle, etc. So this is the path, and whenever you go school, there may be a milestones. कुछ छोटे छोटे पड़ाव आते हैं जो आपको अचीव करने होते हैं. तो वैसे ही जब आप स्कूल जाते हैं, मान लीजिए आपका स्कूल घर से 10 किलोमीटर्स पे है, तो आपको क्या करना होता है, आपको पहले 3 किलोमीटर्स जाना है, 5 किलोमीटर्स जाना है. तो 3 किलोमीटर्स गए तो आपने एक स्टेज अचीव किया, 5 किलोमीटर गए तो एक स्टेज अचीव किया. तो इस तरह से. तो जब हम बात करते हैं करियर डेस्टिनेशन की, तो करियर डेस्टिनेशन क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी को डॉक्टर बनना है तो उनके लिए करियर डेस्टिनेशन होगा उनके लिए करियर डेस्टिनेशन होगा डॉक्टर बनना. किसी को टीचर बनना है, आईएएस बनना है, तो जो भी वो बनना चाहते हैं, दैट इज अ करियर डेस्टिनेशन. करियर पाथ, व्हाट इज करियर पाथ? करियर पाथ दिस जर्नी, कि आप क्या करेंगे. क्लास अगर 9th में है, 10th में है, तो आगे चल के आपको अगर डॉक्टर बनना है तो बायो सब्जेक्ट पढ़ना होगा. और आगे आपको बढ़ना है तो क्या करना होता है, आपको कुछ माइलस्टोन्स आते हैं. जैसे कि क्लास 10th में आपने पढ़ाई की है, तो साइंस के सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा है, तो आपने उसमें स्कोर किया है, आपने प्रैक्टिकल्स को समझा है. ऐसे ही 11th 12th में पढ़ा है, और आपने इस माइलस्टोन के बाद ग्रेजुएशन एमबीबीएस के लिए पढ़ाई. Manisha, can you put yourself on mute? Your mic is on mute. Can you please unmute? Okay, sorry. Yeah. Yes, I unmuted. Okay. यदि हम करियर के कंटेक्स्ट में बात करें रोड मैपिंग की, तो करियर डेस्टिनेशन, जो भी आप बनना चाहते हैं वो डेस्टिनेशन कहलाएगा. और जो पाथ आप फॉलो करते हैं, जैसे सपोज आपको डॉक्टर बनना है, तो आपका डेस्टिनेशन जो होगा वो डॉक्टर बनना होगा, और पाथ होगा जैसे कि आपने साइंस स्ट्रीम चूज किया है क्लास 10th के बाद, और इसमें आपको माइलस्टोन्स आएंगे कि आपको आगे चलकर ग्रेजुएशन करना है, एमबीबीएस जो कि डॉक्टर बनने के लिए करना होता है, फिर एमडी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी आपको देने होते हैं क्लास 12th के पास. तो ये सभी आपके करियर माइलस्टोन्स कहलाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू क्रिएट करियर रोड मैप. करियर रोड मैप कैसे क्रिएट किया जाता है? तो सबसे पहले आपको जो भी बनना है, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप टीचर बनना चाहते हैं, सपोज आपको मैथ्स टीचर बनना है, तो डिफाइन द बिग पिक्चर. द फर्स्ट पॉइंट इज डिफाइन द बिग पिक्चर. Define the big picture means you have to visualize you as your Manisha, your mic is on mute. Oh, sorry. Okay. So it's muted. I don't know why. Okay. So you can visualize yourself as a maths teacher if you want to become a maths teacher. Now this thing is Manisha, yes. your mic is on mute. Yeah, thank you. Yes. So define the end of the roadmap. So your I don't know why it is muting. Okay. So your destination. Manisha, Your just destination. Manisha, just a second. Can I make an announcement? Yeah, I request everyone to please do not play with your mics and do not mute the speaker. This is really a very important information which is given out to you related to career. Please do not touch your mobile phones. Just put them on mute, and you can just put your mics on mute. That's it. Thank you. Manisha, you can continue. Okay, thank you. So now come to the second point. What is the end of the roadmap? So if you want to become a maths teacher, your destination is end of the roadmap. I'm muted. Okay, fine. So as Manisha, I explained, yes. Sorry, you were on mute. Somebody is muted me.
again and again. Okay, fine. Students, I No request problem. everyone to please do not mute the speaker out here. I Okay. request everyone, please. Yes, Manisha, go on. Okay. So we are discussing here third point: career milestones, Okay, ma'am. achievements, and reward. So as I told you, if you want to become a doctor, there may be a few milestones, like you have to do graduation degree, MBBS, MD, then some entrance examination. So these are the milestones. If you achieve these milestones, you can reward yourselves, right? So this process, you have to define the process of selecting your career destination. And there may be some obstacle, right? There may be an economic challenge, there may be a challenge regarding your it may possible in higher education, sometimes teachers are not available. So how you can overcome these challenges, you have to know these things and track your action. What are the actions you are taking to achieve your destination? You have to track all these your actions. Like next, the do regular review. As we talk about the goal buddy, you can take a help of your goal buddy, that they may be your khushi counselor, or a teacher, or parents. So with the help of them, you can review your actions. Find a guide. For example, if you want to become a maths teacher, you can take guidance from the maths teacher. So these are the few steps. Manisha, you're on mute. Yeah. Okay. So now there is few steps. Okay. So now we will discuss few steps. Two steps we will discuss. We will discuss 2 steps to create career roadmap. First step is self-assessment. Second step is begin to identify possible careers. So the first step is very initial step and very important step. So here, what we have to know? We have to know about our strength. What are the things at which we are good? कौन-कौन सी चीजें हैं जो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं? For example, you are good at communication. For example, you are good at teamwork. For example, you are good at leadership. तो ये चीजें आप अगर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ऐसी जितनी चीजें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हम आपको खुशी काउंसलर एक वर्कशीट शेयर करेंगे, उसमें एग्जांपल्स भी हैं. आप अपने अकॉर्डिंग जिन चीजों में आप अच्छे हैं, आप अपने स्ट्रेंथ वहां पर लिख सकते हैं. यू कैन राइट योर स्ट्रेंथ ऑन द वर्कशीट्स, राइट? वीकनेसेस, what are the weaknesses? जिन चीजों में आप अच्छे नहीं है, things in which you are not good at all. So आप अपने weaknesses लिख सकते हैं. For example, it may possible somebody not good at public speaking. For example, somebody having less confidence, but weaknesses can also be improved. तो आप अपनी weaknesses को पहले पहचानिए. You have to know, you have to aware about your weaknesses, know your weaknesses, then you can work out on your weaknesses. Interest. What are the things you like to do? आपको क्या क्या चीजें करना पसंद है? फॉर एग्जाम्पल, यू लाइक टू डू पोएट्री, यू लाइक टू tell stories, you like to do literature work, and you like to do cooking, sports, whatever things. Somebody may have technology interest. So जो भी आपको which interest you have to write in the worksheets. Preferred work environment. For this you have to know aware about the work environment. Which type of work environment you like most? For this you have to visit some places like bank, hospitals, the area where technology work has been done. So you have to visit the areas and you can write your choice where you want to work. Now the second stage is begin to identify possible careers. How you can identify possible careers? Read about different types of careers. You have to read about different types of careers. Where you can read all these things? You can read different types of careers in the newspaper, in the career magazine. Now you are having internet.
So you can read about these things on the some career apps, YouTube's, and you can Google it also. But be aware, if you are reading any type of career options, you have to make sure the things with your guide. And this second thing is meet the people, those who are working in the field you have chosen, right? So if you for example, if anybody want to become wildlife photographer, right? So so they can meet the people, they can meet offline, like they can meet any relative or any known person. They can meet online as well on the social media. They can start following the people in which field you want to go. Suppose as I gave example of wildlife, if somebody want to go in the wildlife photography, they can click some pictures and start follow the people, those who are in this field, and they can take a feedback how, where and how he or she have to improve. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उन लोगों को मिल सकते हैं जो इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आप उन लोगों से डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, और आप इनडायरेक्टली भी उन लोगों से मिल सकते हैं। आप सोशल साइट्स पर भी उन्हें फॉलो कर सकते, आप सोशल साइट्स पर भी उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं। सो वी अंडरस्टूड अबाउट द रिसर्च ऑन करियर एंड सेल्फ असेसमेंट. So on the basis of self assessment and research of the career, you can go for the best career match as you choose, right? So here are few questions that will be given to you by your Khushi counselor, like what is my subject interest? आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आता है? व्हाट ऑल कैन आई स्टडी आफ्टर 10th एंड 12th? आप 12th के बाद क्या पढ़ना चाहते हैं? 10th में यदि 9th में है तो आप 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं? वेयर ऑल कैन आई स्टडी? कहाँ आप आगे चल के पढ़ाई कर सकते हैं? आप कहाँ पर ऐसे जगह है जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं? हाउ डू आई प्रिपेयर? और जो आप बनना चाहते हैं उन सब चीजों की तैयारी के लिए आप उन चीजों की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है? इट इज द राइट चॉइस. क्या आप जो बनना चाहते हैं वो आपके लिए राइट चॉइस है? व्हाट आर द प्रोफेशनल ऑप्शंस? आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है, फॉर एग्जांपल आप यदि इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कौन कौन से सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आप कौन कौन से अलग अलग फील्ड में जाकर काम कर सकते हैं? तो ये सभी डिटेल्स, जितना भी आपको जानकारी है, आपको वर्कशीट दी जाएगी तो उसमें आप फुलफिल कर सकते हैं. तो जब भी आप करियर की बात हम जब करते हैं तो आपने सपोज मान लीजिए एक करियर डिसाइड करते हैं, दैट मे बी योर प्लान ए. सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर प्लान बी एंड सी, क्योंकि जब करियर माइलस्टोन आते हैं तो कभी कभी कुछ सैडनेस हो सकती है, अपसेट आप हो सकते हैं. यदि आपने जो भी माइलस्टोन रखा है, सपोज आपने नीट एग्जाम क्लियर करना है क्लास 12 के बाद, और सपोज अगर किसी वजह से नहीं कर पाए तो क्या करना है? तो आपको वहां पर उदास नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है. नेवर गिव अप, ऑलवेज मूव ऑन. आप उसके साथ ही नेक्स्ट जो आपका प्लान भी है, आप उस फील्ड में जा सकते हैं, दैट मे बी फार्मा एंड अदर मेडिकल करियर एरियाज. So जो भी the decisions that young people make, ओके, सो जो भी डिसीजंस आप इस अपनी उम्र में लेते हैं, वो सभी डिसीजंस का आपके पूरे लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है, आपके सोशल लाइफ पर, आपके फाइनेंशियल लाइफ पर, साथ ही आपके जो भी आगे हेल्थ जो रहते हैं उस पे भी आपके इस समय लिए गए करियर डिसीजन का इम्पैक्ट रहता है. सो वाई करियर रोड मैपिंग इज इम्पोर्टेंट? क्यों हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं करियर रोड मैपिंग की? यस, Sina says my favorite subject is science. Very good, Sina. Okay, so why career road mapping is important? क्यों important है career road mapping? Yes,
Anybody? Please tell in English. Okay. Why career road mapping is important? Yes, I am asking to you, children, why career road mapping is important? आगे जाकर हमारी हेल्प करेगा. मैथ्स इज माय फेवरेट. ओके, मैथ्स इज माय फेवरेट. ओके ओके, सम ऑफ यू आर रिस्पॉन्डिंग. सो by the career road mapping, you will be aware about the things. No, you will be aware about yourself, know yourself. How you know yourself? You will be aware about your strength and weakness. A small story I will tell you here. You know Alexander the Great? Alexander the Great was having a dream to rule over a world. Alexander Great जो थे वो पूरी दुनिया के विश्व विजेता बनना चाहते थे और 16-17 साल की उम्र में उन्होंने ये सपना देखा था. He has dreamed at the age of 16 and 17. So after that, what he did, he came to know how he can. To whom you ask? His teacher. Who was his teacher? Aristotle. Aristotle told the Alexander the Great, yes, you can. But when you know yourself, it is the beginning of all the wisdom. ओके, तो एरिस्टोटल ने कहा कि यदि आप अपने आप को जान जाएंगे तो आप जो भी करना चाहते हैं आप उसे बहुत अच्छे से कर लेंगे. तो क्या हुआ, अलेक्जेंडर जो थे अलेक्जेंडर ने अपने स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से समझा. he was good at leadership, he was courageous, he was fearless. So अपने स्ट्रेंथ को समझा, बट somehow वो पूरी तरह से विश्व विजेता नहीं बन सके क्योंकि कुछ वीकनेसेस जो थी जिसका अंदाजा उन्हें नहीं था. जैसे कि उन्हें उनका लो इमोशनल क्वेश्चन था, जैसे लोगों के प्रति संवेदना उनकी थोड़ी कम थी. जैसे आगे बढ़ रहे थे वो अफ्रीका, पर्शिया होते हुए कश्मीर तक, तो वहां पर उन्हें आगे बढ़ते समय थोड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा. जैसे कि उनके जो सैनिक थे वो बीमार हो गए और उन्होंने कहा हम आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज को नहीं समझा और फिर अंततः उन्हें वापस लौटना पड़ा. सो आपको यहाँ पर ये स्टोरी बताने का कारण ये है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स को तो समझे ही समझे, अपने वीकनेसेस को भी समझे. और इफ यू विल नो अबाउट योर स्ट्रेंथ, you can make your strength more strengthened, and you can make your weaknesses, you can convert your weaknesses to your strength also. आप अपने वीकनेसेस पे भी काम करके इम्प्रूव कर सकते हैं और स्ट्रेंथ को और अच्छा कर सकते हैं. Now the second thing is inform yourself. As we talk about कि आपको जो भी अलग अलग करियर है, कोर्सेज हैं, कहाँ से आप कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, सभी चीजों को जानने का और एक्सपीरियंस कीजिए जो लोग उस फील्ड में हैं उनसे मिल करके. Now the next thing is plan for yourself. Focus on the right course at the right campus. Prepare for the future jobs. Okay. So आपको क्या करना है? You have to focus what you want to do in life. And as we discuss about the steps of the roadmap, you have to plan yourself to achieve your career. Now the next thing is benefits of career roadmap. What are the benefits of career roadmap? Why we are talking here about the career roadmap? Is anybody can answer? Anybody can answer? What are the benefits if we make a career roadmap? Benefits हम इससे बेनिफिट I'm है asking. कि रोड मैप Yes. से हमें खुद को जानने का मौका मिलता है. Yes, very good. खुद को जानने का मौका मिलता है. Very good. और अपने करियर को पूरा करने के स्टेप के बारे में पता चलता है. वेरी गुड. करियर को पूरे करने के स्टेप के बारे में पता चलता है. यस, टू अवेयर अवर सेल्फ, करियर रोड मैप इज वेरी यूजफुल. माई गोल्स, वेरी गुड, very good. Some of you are responding, very good. So now we will discuss benefits of career roadmap. Yes, you told very right. Right assessment of strength and weakness, so you can make your strength more strengthened, and you can overcome your weaknesses as well, and you will aware about your strength and weakness. Right goal setting leads to better choice. You can set a right goal. If you know
all the choices, all the self assessment, you can set a right career goal for yourself. Explore various career choices. Explore various career choices. You will be aware about the various choices available uh, in the current time of career. जब भी आप जैसे 9th में है तो नेक्स्ट जब भी आप 8-10 साल बाद जब करियर में जाएंगे तब कौन से करियर ऑप्शंस हैं, तो ये सभी चीजों की आपको जानकारी रहेगी. The right guidance and support. You will be able to take right guidance and support if you know yourself and career choices available. Success and satisfaction. It is a very important 5 point. Success and satisfaction. Why success is important? Whenever yes, success is important, and the meaning of the success is different for different peoples. हो सकता है किसी के लिए सक्सेस का मीनिंग मनी से हो, किसी के लिए सक्सेस का मीनिंग सोशल सर्विसेज से हो. तो सबके लिए सक्सेस और सेटिस्फेक्शन के अलग अलग मीनिंग होते हैं, और आप सक्सेस और सेटिस्फेक्शन तभी फील कर सकते हैं जब आप अपने आप को समझेंगे और अवेलेबल करियर चॉइसेस को समझेंगे. तो यहाँ पर 3 चीजें आपको बहुत 3 C's जो हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. क्यूरोसिटी, क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस. व्हाट इज क्यूरोसिटी? इफ यू नो अबाउट योरसेल्फ, you will be more curious about yourself, and if you know about the career, you will be more curious about your careers as well. You will be more clear about yourself, and you will be more clear about available career as well. You will be more clear about confidence, and you will be more clear about the career availables in the areas. So like this, you will be aware about the benefits about of the career road mapping. So at last, I want to summarize the things. To create a successful career roadmap, you have to be make aware about yourself. You have to know yourself. You have to plan for yourself, and you have to know the career choices available. Okay. So we will share a movie clip from the movie Laksh. You can see that movie. In that movie, it is told that whatever you want to do, give your 100% in that. आप जो भी करना चाहते हैं, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है. आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम में अपना 100% दीजिए, उसे बहुत अच्छे से कीजिए. Then definitely you will be successful and satisfied. Thank you so much. Thank you, Manisha. Thank you, Manisha, for sharing your knowledge on career roadmap, and then going ahead with a strength-based approach in which the child itself has to identify their own interest areas, and they have to check with themselves whether they can do it or not do it. And I think going ahead with that, I think you really emphasized on plan B. And I think at every step of life, it is very important that we need to have a plan B for our own career goals, of course, but in life in general as well, because there may be some circumstances which may be not working in our favor, and then suddenly then we won't be very confused at that point of time. So I think you rightly brought up this topic on the plan B thing. And going ahead, I think this Alexander story is something which I think it's the basis of the career counseling, because that's something that we keep hearing from a lot of people about his own greatness and what is there. To sum up with, I think the 3 C's and along with curiosity, the clarity, and the confidence, to merge it with to know yourself, keep yourself informed and plan accordingly. I think that are the few various important steps that needs to be taken care when we talk about career roadmap. Just like we have a Google map, I think the same thing needs to be implemented in the career map as well. So once again, really thank you, Manisha, who I think it was great. I think you were also directly interacting with the students out here. You were listening to their response, and they have been we have been had overwhelming responses in the chat box as well. So once again, thank you, Manisha, for sharing all your knowledge. Thank you. And I would also like to thank each student out here for showing their interest throughout the session.
And I also encourage students to, if they have any queries out there related to career, they can, you can go back and talk to your counselors, right? And also you can, mail it to our email ID, which is career.counseling@kushi.org. We would be happy to help you with all your doubts related to query along with that. And also I think we have already been in place with the seventh session, which will be held on next Friday, that is 24th of July. And also there is also a feedback form which is also circulated in the chat box, so I request every student to go through the feedback form, fill it, and let us know if there is anything that we can improve. And if you have anything to add on to our session, your suggestions are most welcome to it. So wrapping up the sessions, thank you students for joining us this time. Thank you Manisha once again, and we'll again hope to see you soon with our upcoming sessions in the career webinar series. Thank you students, take care, stay safe.